सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। सो गाइस, पहले तो एडवांस में हैप्पी दिवाली। सो गाइस, दिवाली आने वाली है, सो उसके लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोज सोच के रखी है डेकोरेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, ये जो सबसे पहली वीडियो डेकोरेशन के लिए, इसलिए हम आज हम बनाने वाले हैं इस वीडियो में एक छोटा सा मिनी डीजे लाइट। सो गाइज, इस वीडियो को प्लीज कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बहुत ही मस्त वीडियो गाइज। इसलिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लो, ताकि मैं और कोई भी वीडियो ऐसी लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप उस वीडियो को वॉच कर सको। सो गाइज, बिना करे आपको बोर, चलते अपने वीडियो की ओर। सो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैं जो यहाँ पे प्लास्टिक का डिब्बा यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको इजीली घर पर ही यार मिल जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कार्डबोर्ड का पीस का यूज करूँगा गाइज। और उसके बाद चाहिए कि गाइज कुछ हमको RGB LED बल्ब, जो कि गाइज मैं जो मार्केट से यार पूरा पैकेट ही परचेज कर लाया। RGB बल्ब तो नहीं मिले, बट जो हमारी साइकिल का जो बल्ब होता है उसमें जो लाइट लगी होती है, ये बाइसिकल वाली लाइट है हमारी, तो इनका जो मैं पूरा पैकेट परचेज कर लाया है गाइज। ये मेरे को 10 रुपये का एक पीस पड़ा मार्केट से। ओके, सो फ्रेंड्स, ये जो कलर्ड बल्ब लगा हुआ है इसमें RGB LED बल्ब। ओके, तो फ्रेंड्स, इसी के अंदर हमारी बैटरीज होती हैं, और देख सकते हो कितना अमेजिंग ये लग रहा है गाइज जलने के बाद। ओके फ्रेंड्स, तो मैं जो है इसको मार्केट से 10 रुपये का पीस परचेज करके लाया। आप जो है मार्केट में जाके देख सकते हो कि आपकी मार्केट में कितने रुपए का ये मिल रहा है। ओके, और गाइज इसके बाद हमको कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा की। ओके, सो फ्रेंड्स, चलिए अब फटाफट से इस लाइट को कंप्लीट करते हैं। तो लाइट को बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस इस वीडियो में किया गया है वो आप जो बिल्कुल अच्छी तरीके से देखना। ओके, सो चलिए फटाफट से अब देखते हैं इसको मैंने किस तरीके से बनाया गाइस। तो यहाँ पे मेरे को जो है ना 2 लेग्स लगानी होंगी, यानी 2 यार क्या बोलूँ यार, मैं लेग्स बोले तो टांग है ना, वो सब लगानी है इसमें। वो सब कैसे लगानी है वो सब वीडियो में देखिएगा, और गाइस वीडियो का मज़ा लीजिएगा। Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption, breathe faster to... So guys, अब मैं जो इसमें अपना मास्टर सर्कल का यूज़ कर रहा हूँ। ये सर्कल का मास्टर है गाइज, जो कि सभी को ऑपरेट करता है। ओके, मास्टर है ये। और गाइज इसका जो मैं मेज़र कर लेता हूँ कि ये जो हमारे किस गोले में LED आती है। सो फ्रेंड्स, इस गोले में हमारी जो LED आ चुकी है, और गाइज इस साइज के मेरे को गोले बना लेने हैं। जो हमारा प्लास्टिक का डब्बा था उसका जो ढक्कन था उसके ऊपर। ओके, सो चलिए फटाफट से बनाते हैं, और इसमें होल करके फिर अपनी लाइट्स को इसके अंदर सेट कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे गोले बना लिए हैं, और इनको बनाने के बाद फटाफट से इनको कट करते हैं, ताकि जो हमारी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो और इस जो वीडियो का मेन पॉइंट है वो आपकी समझ में आए। ओके फ्रेंड्स, Nursery and count sheep.
inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the